time and again we have been investing into gold, and gold has been the very traditional format of an investment in at least from the Indian context, not only from the Indian investors. Globally, we've seen from the Egyptian time to any Roman Empire, you look into it, you will see everybody holding gold as a very important investment in their portfolio. But times have changed, markets have changed, economies have changed. Today also we like to invest into gold, but is buying physical gold is the right option when it comes to investments? Matlab, when my objective of investment in gold is only to make sure that my principal is protected and I am getting something better out of it, does it make sense to hold physical gold, especially in the format of a jewelry or any other format like a biscuit or a piece, when the objective here is clearly defined as investments? So we were just trying to compare what are the best options available. Now, with the new economy, we have multiple options to invest into gold. But first and foremost, itna to humko malum hai that we have to invest into gold because it helps in portfolio diversification, it helps in easy inheritance. गोल्ड में कोई मेंटेनेंस चार्जेस नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है आपका वेयर एंड टेयर होगा तो आपको थोड़ा सा पॉलिशिंग कराना पड़ता है, बस दैट्स इट. इट इज अ हाईली लिक्विड असेट क्लास. द बेस्ट पार्ट ऑफ गोल्ड इज आप कभी भी कहीं पे भी जाके बेच सकते हो, एंड देयर इज नो करेंसी का डिमार्केशन की ये गोल्ड अगर आपके पास रुपीज में है तो रुपी में बिकेगा, आप किसी कंट्री में डॉलर में बेचना है तो डॉलर में बिकेगा, यूरोप में जाओगे तो यूरोप में बिकेगा. एटलीस्ट लिक्विडिटी हमेशा रहेगी और उस स्टेट उस कंट्री की करेंसी एप्लीकेबल हो जाएगी. वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग गोल्ड में कि प्राइस स्टेबिलिटी होती है. गोल्ड का प्राइस ग्लोबली डिफाइंड होता है, तो यू गेट योर प्राइस स्टेबिलिटी. ऐसा नहीं है कि इंडिया में अगर गोल्ड 5,000 रुपीज पर ग्राम है तो यूके में आपको 2,000 रुपीज पर ग्राम मिलेगा, तो ऐसा भी नहीं होता है. ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ प्राइसिंग ऑफ गोल्ड है, तो यू गेट अ प्राइस स्टेबिलिटी एंड इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन अ कंट्री स्पेसिफिक. थोड़ा बहुत 19-20 फर्क पड़ता है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, but that is very very marginal, largely on the basis of the import cost, the pricing structure, the tax structure, but otherwise the pricing remains constant for almost everywhere. And last but not the least, in case of an emergency, gold is considered as a hedge against inflation and currency depreciation. So as an asset class allocation, you should always make sure that your 10 to 20% of your portfolio, depending upon your risk appetite, should always be there in gold. ये हमारी एक डेफिनेशन हो गई व्हाई वी शुड इन्वेस्ट इनटू गोल्ड. एक्चुअली फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करना यानी ज्वेलरी के फॉर्मेट में इन्वेस्ट करना, इज इट अ राइट ऑप्शन? या फिजिकल गोल्ड खरीद लेना, एक बार एक बिस्किट खरीद लेना, इज इट अ राइट ऑप्शन? या कुछ न्यू एज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जैसे कि गोल्ड ईटीएफ एक इंस्ट्रूमेंट है वेयर यू कैन इन्वेस्ट इनटू गोल्ड, इज दैट अ राइट ऑप्शन? और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफर किया है वाया आरबीआई, जिसे हम बोलते हैं सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स यानी एसजीबीज, which are issued by government of India on behalf issued by RBI on behalf of government of India, should you look this as an instrument for investing into gold? So let's try and evaluate what are the basic features of an SGB as an instrument. The first and the foremost feature of an SGB as an instrument in gold is कि ये आपको 2.5% रेट पे इंटरेस्ट पे करता है ऑन एन एनुअल बेसिस. So annualized 2.5% rate of interest, but ये आपको every half year यानी semi annually आपको ये interest मिलता है when you're holding SGB. This is the very unique feature of an SGB because किसी other format में gold hold करने में आपको कोई ब्याज नहीं मिलता है. यानी कि अगर आपने SGB होल्ड किया हुआ है तो आपको 2.5% के हिसाब से एनुअलाइज्ड ब्याज मिलेगा इन योर अकाउंट सेमी एनुअली एवरी हाफ ईयर, सबसे फॉर्मेट. और इसका ड्यूरेशन होता है 8 years ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अ ड्यूरेशन ऑफ SGB. तो आपने गोल्ड इन्वेस्ट किया तो 8 years में मैच्योर होता है. इसका एक मोटा मोटा कैलकुलेशन करें, अंडरस्टैंडिंग निकालें तो 2.5% पर ईयर के हिसाब से 8 years आपने होल्ड किया तो आपको 20% ऑफ द गोल्ड की प्राइस पे आपको इंटरेस्ट इनकम आ गया, यानी 20% तो ब्याज इनकम आपकी अर्न हो गई. तो अगर बाय चांस गोल्ड का प्राइस कुछ भी एप्रिशिएट नहीं हुआ 8 years ऑफ होल्डिंग में तो आपको एटलीस्ट 20% तो फिर भी गेन हो गया एज कंपेयर टू फिजिकल गोल्ड, तो आपको कुछ मिलेगा भी नहीं. सेकेंड होता है इसमें कोई स्टोरेज कॉस्ट नहीं है. एसजीबी
इधर इन द फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, अगर आप फिजिकल लेते हैं तो फिजिकल सर्टिफिकेट लेते हैं, पर अगर आप ऑनलाइन एसजीबी अप्लाई करते हैं तो एसजीबी सिट्स इन योर डीमैट अकाउंट, विच मीन्स आपको कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है। जो आपका डीमैट एग्जिस्टिंग है उसी डीमैट में एक सिक्योरिटी एसजीबी और ऐड हो जाती है, वो आपके अकाउंट में रहती है। तो देयर इज नो एडिशनल चार्ज ऑफ होल्डिंग द सिक्योरिटी, अनलाइक फिजिकल गोल्ड में होती है। आपको लॉकर में सेव करना पड़ेगा, लॉकर चार्जेस होंगे, रेंट्स होंगे, एक्सेट्रा। as gold is the most liquid investment option, फिजिकल गोल्ड की तरह एसजीबी में भी आपको पूरी लिक्विडिटी मिलती है। लिक्विडिटी इन द फॉर्म कि ये इंस्ट्रूमेंट लिस्टेड होता है एक्सचेंजेस में, स्टॉक एक्सचेंज में, बीएससी एनएससी में, एंड इट इज कंप्लीटली ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट। यू कैन बाय एंड सेल गोल्ड बॉन्ड्स एसजीबी एज यू बाय एनी अदर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। आप रिलायंस, इन्फोसिस खरीदते हैं, सेम फॉर्मेट में आप एसजीबी भी खरीद या बेच सकते हैं। दिस इंस्ट्रूमेंट इज गारंटीड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सोवरिंग गारंटी है। सोवरिंग, तो सोवरिंग का मतलब ये होता है गवर्नमेंट, यानी सोवरिंग का बाय डेफिनेशन तो बेसिकली राजा होता था। So it's now it is government or the central most authority which controls this environment. So SGB is a sovereign bond, sovereign gold bond. यहाँ पे आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी मिलती है to use this as to make sure that this instrument will never default or delay in your interest payment. सोवरिंग गोल्ड बॉन्ड की एक और बहुत बड़ी खासियत है जो नॉर्मल फिजिकल गोल्ड के कंपैरिजन में डिफरेंट है, इज दैट इफ हेल्ड टिल मेच्योरिटी द इंटायर कैपिटल गेन इज टैक्स एग्जेम्प्टेड। यानी कि अगर इफ यू हैव इन्वेस्टेड इन गोल्ड, फॉर एन एग्जांपल 100 रुपी पर ग्राम के हिसाब से इन्वेस्ट किया, और मेच्योरिटी में 8 इयर्स बाद गोल्ड का प्राइस हो गया 120 रुपीज पर ग्राम। सो जो 20 रुपीज का कैपिटल गेन बना, in physical format you will be liable to pay capital gain tax on 20 rupees, but if you're holding SGB, there is this capital gain is exempted from any format of taxation, so its capital gain is 100% tax free in the hands of an investor. Apart from this, SGB में आपको जो 2.5% इंटरेस्ट मिलता है उस पे भी कोई टीडीएस नहीं लगता है। सो देयर इज नो टीडीएस विच इज एप्लीकेबल in the hands of an investor for the interest income you earn. So you have a dual advantage. If held till maturity, you get tax exempted in form of capital gain tax exempted. And if you're holding SGB and the interest income which you earn, that is 2.5% per annum, that interest income is not subject to any TDS. As I said earlier also, if you are buying these gold bonds online, you get a 50 rupee discount to the market price of the gold. So whatever the gold price for a 100 gram or a 1 gram gold price is defined by the RBI before issuing the bond, that gold price पे आपको 50 rupees per gram आपको discount मिलता है when you buy online. अच्छा, इसमें सबसे इजीएस्ट फॉर्मेट है लोएस्ट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। यू कैन इन्वेस्ट एज लो एज 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। सो अगर आपको कोई इन्वेस्ट करना हो तो मिनिमम, व्हाट इज द मिनिमम टिकट साइज यू कैन इन्वेस्ट? द मिनिमम टिकट साइज यू कैन इन्वेस्ट इज 1 ग्राम। सो आप अगर 5,000 रुपीज का गोल्ड है तो 5,000 रुपीज का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो पर ग्राम के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 1 ग्राम, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, वट एवर यू फील लाइक। Where do you buy gold bonds, sovereign gold bonds? तो आपको authorized stock exchange and their brokers, nationalized banks and like scheduled private banks, foreign banks are allowed to sell SGBs. Stockholding of India has been given permission to sell SGBs as well as designated post office. तो आपको broker के terminal से मिलता है, बैंक के terminal से मिलता है, stock holding के platform से मिलता है. So there are multiple places where you can apply for SGB. So resident Indian individual investors are allowed to invest into SGBs. So individuals, HUF, trust and universities, charitable institutions, these are the entities which are allowed to invest into SGBs. Largely ये फॉर्मेट है हमारे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए, हाउस होल्ड इन्वेस्टर्स के लिए ये प्रोविजन दिया गया है। फर्स्ट प्रायोरिटी उनको मिलती है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कैटेगरी में, एचयूएफ में, इंडियन हाउस होल्ड्स के लिए, अपार्ट फ्रॉम ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, टू इन्वेस्ट इनटू एसजीबी इंस्ट्रूमेंट्स and make sure that they get the best returns when investing into gold.
प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपका बेसिक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में आपको पैन नंबर देना होता है, यू हैव टू गिव योर बैंक अकाउंट डिटेल्स जहां से प्रोवाइड बॉन्ड्स आप फंड्स ट्रांसफर होंगे, और आपका डीमैट अकाउंट डिटेल्स जहां आपके एसजीबी क्रेडिट होंगे। तो आपको बेसिक इतने ही डॉक्यूमेंट्स लगता है जिसे हम बेसिक केवाईसी कहते हैं। आपको पैन, बैंक डिटेल्स एंड योर डीमैट डिटेल्स वेयर यू वांट टू मेक श्योर दैट योर बॉन्ड्स आर क्रेडिटेड इनटू योर अकाउंट। और जो आपका, अगर आपने फिजिकल एप्लीकेशन किया हुआ यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भर के किया है, तो आपको जो आपको बैंक में इंटरेस्ट इनकम चाहिए या रिडम्पशन में आपका पैसा वापस चाहिए, वो बैंक अकाउंट डिटेल्स मेंशन कीजिए। इफ यू डू ऑनलाइन, तो आपने जो ऑनलाइन बैंक डिटेल्स दिया है और जो आपका डीमैट लिंक्ड बैंक है उसमें आपको इंटरेस्ट इनकम और आपका पेमेंट आ जाएगा। This is a very very interesting slide. Probably everybody would be interested to know हमने क्या किया है कि just to make sure that we get all the features, important features aligned on a single page and take a comparison between SGB and physical gold and gold ETFs. आपको क्या differentiation मिलता है, क्या advantages हैं, या pros and cons हैं, you can understand in a single slide. तो सबसे पहला चीज तो मिनिमम टिकट साइज तो 1 ग्राम होता है। मिनिमम टिकट साइज इज 1 ग्राम व्हेन यू कम टू व्हेन यू इन्वेस्ट इनटू एसजीबी। व्हेन यू बाय फिजिकल गोल्ड इन द फॉर्मेट ऑफ ज्वेलरी, तो देयर आर मिनिमम डेफिनेशन, आपको कितना ग्राम खरीदना है उसके ऊपर लिमिटेशंस होते हैं। यू कैन गो 1 ग्राम गोल्ड खरीदना यानी एक छोटा सा टुकड़ा खरीदना विल बी समटाइम्स बिकम वेरी एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग व्हेन यू बाय अ फिजिकल गोल्ड। गोल्ड ईटीएफ में भी आपको खरीदने का ऑप्शन होता है, वो 1 यूनिट होता है, बिकॉज अंडर म्यूचुअल फंड के सेक्शन में ईटीएफ में आपका एनएवी कंपोनेंट होता है। सो एनएवी इज व्हाट 1 यूनिट यू कैन सब्सक्राइब टू। मोस्टली द एएमसीज डिफाइन देयर मिनिमम सब्सक्रिप्शन। सो अगर वो एनएफओ होता है तो आपको मिनिमम 100 यूनिट्स, 5000 यूनिट्स वो डिफाइन करते हैं आपका मिनिमम क्या है। और सेकंड मतलब ऑन द ओपन एंडेड अगर इश्यू स्ट्रक्चर आप जाते हो, तो वट एवर द prescribed structure given by the respective AMC you have to apply for. Generally 1 यूनिट is a tick size उनमें भी होता है। and the unit यानी 1 यूनिट का जो NAV based pricing होता है, it can vary from 0.01 gram to 1 gram which the NAV unit. So वो 50 रुपीज का भी NAV हो सकता है, 500 रुपीज का भी NAV हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन दी AMC वो आपको कैटेगराइज कराता है। Loan as a bond as a collateral. So yes, SGB can be used as a collateral. It is accepted as a collateral. Physical gold भी as a collateral use होता है, gold ETF भी as a collateral use होता है। So RBI ने प्रिस्क्राइब किए हुए हैं LTV ratios for gold। अगर आपको गोल्ड कोलैटरल रख के लोन लेना होता है, सो दैट एलटीवी रेशियो इज एप्लीकेबल वेदर इट इज अ फिजिकल गोल्ड और एन एसजीबी गोल्ड यानी सोवरिन गोल्ड बॉन्ड सर्टिफिकेट का गोल्ड। तो वो दोनों तीनों में ऐसे ही फॉर्मेट में चलता है। बट यस, इट इज एक्सेप्टेड एज अ कोलैटरल। जैसे आप फिजिकल गोल्ड रखते हो वैसे आपको सोवरिन गोल्ड बॉन्ड भी कोलैटरल के फॉर्मेट में यूज करके आपको अगर पैसा रेज करना हो, शॉर्ट टर्म फंड चाहिए हो, तो यू कैन यूज इट। Charges are very very important because it's add up to the cost of holding that instrument or holding an investment. So SGB में fortunately there are no other charges एक्सेप्ट पर आपने जो आपके डीमेट में आपको जो भी मिनिमम ट्रांजैक्शन लगता है या आपका एएमसी लगता है, एनुअलाइज्ड एएमसी, जिसमें आप सारा चीजें रखते हैं। सो जनरली एएमसी 300 रुपीज, डीमेट चार्ज करती है 300 रुपीज एएमसी और 500 रुपीज एएमसी, जिसमें आप सारी इक्विटी भी रखते हैं। सेम फॉर्मेट में आपका एसजीबी भी रहता है, तो देयर इज नो एडिशनल चार्ज टू इट। वेरएस अगर आप फिजिकल गोल्ड यूज करते हैं, यानी आपने कुछ ज्वेलरी खरीदी है, कुछ फिजिकल आइटम खरीदा है गोल्ड का, यूटेंसिल्स खरीदे हैं, जो भी फॉर्मेट आपने खरीदा है, तो दो चीजें तो आपके उसके मान के चलिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज अ मेकिंग चार्ज, जो आपको गोल्ड पे लगना ही लगना है। अगर आपने कोई भी ज्वेलरी कंपोनेंट या कोई भी प्रोडक्ट खरीदा है गोल्ड का, दैट मेकिंग चार्ज इज वेरी फ्रॉम 1% टू 5%, इन सम प्लेसेस इवन 10% डिपेंडिंग अपॉन इफ यू बाइंग अ ज्वेलरी स्ट्रक्चर। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमको भी मालूम है आज इवन इफ यू बाय ज्वेलरी, नॉट एवरीबडी कीप्स ऑन वेयरिंग द गोल्ड ज्वेलरी ऑन अ डे टू डे बेसिस. Only special occasions is when the gold jewelry is taken out. Most of the time it is kept in bank lockers. So there is a locker charge which is there, annualized locker charges which a bank levies to the investors.
अकाउंट। तो आपको ये एडिशनल चार्ज लगता है। तो अगर आपने वही होल्ड किया और 1,000 रुपए पर एनम बैंक का चार्ज है, तो अगर 8 साल यूज किया तो 8,000 रुपए आपका वो एडिशनल लॉकर चार्जेस भी एडिशनल लग गया, अपार्ट फ्रॉम दैट मेकिंग चार्जेस। इसके विपरीत गोल्ड ईटीएफ में देयर इज एन हाई अमाउंट ऑफ एक्सपेंस रेशियो, इवन दैट एक्सपेंस रेशियो इज लेस एज कंपेयर टू द नॉर्मल म्यूचुअल फंड चार्जेस व्हिच जनरली मूव फ्रॉम 0.5 to 2.5% एट सम केसेस। गोल्ड ईटीएफ में एक्सपेंस रेशियो जो एनुअलाइज लगते हैं ऑन द अमाउंट ऑफ गोल्ड यू आर होल्डिंग और द एयूएम यू आर होल्डिंग, इट कैन रेंज फ्रॉम 0.5% टू एज हाई एज 1%, डिपेंडिंग अपॉन एएमसी टू एएमसी, कौन सी एएमसी का कौन सा प्रोडक्ट है, उस पे आपको एडिशनल चार्जेस एनुअलाइज लगते हैं। तो एवरी ईयर यू विल पे दैट काइंड ऑफ एक्सपेंस रेशियो। इसका मतलब इवेंचुअली ये हुआ कि आपका इतना रिटर्न उसमें से कम होता जा रहा है आपके टोटल और रिटर्न में से, वो आपको एसजीबी में नहीं होता। प्योरिटी के फॉर्मेट में भी एसजीबी सबसे ऊपर उठता है, बिकॉज ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड है। ये 999 प्योर गोल्ड इशू होता है, 999 की प्राइस पे इशू होता है, तो यू गेट 100% प्योरिटी ऑफ गोल्ड। फिजिकल गोल्ड में तो ऑब्वियसली हम जनरली प्रेफर करते हैं, व्हाट आई हैव सीन इन माय यंगर डेज व्हेन माय मॉम यूज्ड टू गो एंड बाय गोल्ड, तो हमको वो एक ही दुकान में जाना है, वही पहचान वाला है, उसी से लेंगे, बिकॉज हमको मालूम है कि वहां से गोल्ड की प्योरिटी मिलेगी। यू कैन नॉट गो आउट एंड बाय एनी अदर प्लेस। Nowadays there are some more stringent regulated guidelines where gold needs to be hallmarked in terms of to check the purity, but still there are a lot of frauds which do happen for the impurity of the gold. So SGB safeguards you from that issue. Same is the case for gold ETF. Gold ETF, you have the high purity. The gold ETF AMCs decide what kind of gold they are holding. Generally, they also hold 999 purity of gold. इसके बाद आ जाता है इंपॉर्टेंस इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी एंड ट्रेडेबिलिटी। हमको लगता है कि हमारे पास फिजिकल गोल्ड है तो हम बहुत सेफ है, कभी हमको लिक्विडिटी चाहिए होगी तो हम मार्केट में जाके बेच देंगे। सो आप ये चीज जैसे आपके डीमेट में है, जैसे आपके डीमेट में कोई शेयर पड़ा हुआ है, आपने अपने ब्रोकर अकाउंट में लॉग इन किया और वहां से अपने डीमेट के अकाउंट को सेल किया, सेम वे आपको एसजीबी भी करना होता है। If you want to sell this SGB on the exchange, the same way it is available. It is there in your demat account. आपको just log in करना है और यहाँ से ट्रेड करना है, तो और आपका बॉन्ड आपका ट्रेड हो जाएगा। सो वॉट एवर द ट्रेड आपको बेचना है या लिक्विडिटी चाहिए, यू कैन इमीडिएटली डू इट ऑन द एक्सचेंज। और वही सेटलमेंट है, वही क्राइटेरिया में आपके जो भी बैंक अकाउंट लिंक्ड है आपके डीमेट से, उस अकाउंट में आपका क्रेडिट आ जाएगा, पैसा आपके अकाउंट में। सो दिस इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, दिस इज ट्रेडेड इन द मार्केट, बोथ द एक्सचेंजेस बीएसई एंड एनएसई। अच्छा, नाउ इंपॉर्टेंट थिंग, when you trade a particular instrument on the exchange, the price discovery is on the basis of the buyer and seller determination. Suppose उस समय बायर नहीं है तो शायद आपको लोअर रेट पे प्राइस डालना पड़े, ठीक है, टू गेट लिक्विडिटी। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर बायर नहीं है तो गवर्नमेंट ने उसमें एक और प्रोविजन दिया कि फ्रॉम 5th ईयर ऑनवर्ड्स एवरी 6 months जब भी इंटरेस्ट पेमेंट विंडो होता है, उसी समय गवर्नमेंट 5th ईयर ऑनवर्ड्स एक रिडम्पशन ऑप्शन भी ओपन करती है, जहां पे इन्वेस्टर्स अपना बॉन्ड रिडीम भी कर सकते हैं। तो दो चीजें हो गई, एक्सचेंज में आप ट्रेड कर सकते हैं और 5th ईयर ऑनवर्ड्स आप रिडीम भी कर सकते हैं। नाउ रिडम्पशन का एडवांटेज क्या होता है कि प्राइस डिस्कवरी इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ द बायर। सामने वाले के डेफिनेशन पे या डिसाइड पे आपको प्राइस नहीं देना पड़ेगा। प्राइस डिस्कवरी इज व्हाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड्स फॉर दैट पर्टिकुलर डे, गोल्ड की क्या प्राइस होनी चाहिए फॉर 999 प्योरिटी गोल्ड, जो कि अगेन सेम फॉर्मेट में लास्ट 3 days क्लोजिंग प्राइस, एवरेज ऑफ लास्ट 3 days क्लोजिंग प्राइस ऑफ आईबीजेए, इंडियन बुलियन जेलर्स एसोसिएशन का जो प्राइस होगा वही प्राइस पे आपका रिडेम्पशन विंडो मिल जाएगा। तो अगर आपने बड़ा क्वांटम लिया हुआ है या आपको उसके बाद लिक्विडिटी चाहिए कि आपको प्राइस डिस्कवरी एक्सचेंज पे अच्छी नहीं मिल रही है, तो आप यहाँ पे भी ले सकते हो। तो आपको 5th ईयर ऑनवर्ड्स, 5th ईयर, 5.5 ईयर, 6 ईयर, 6.5 ईयर, 6 months को विंडो मिलता है टिल मेच्योरिटी। सो यू गेट योर redemption window. So you get both exchange tradability as well as redemption comfort by the issuer when you are investing into SGB. Physical gold is, yes, fairly liquid. You can go out to the nearest jeweler wherever you have the comfort and go and give your you can take the price. Unfortunate part with this is
As I said, price discovery is again from the side of the buyer. The buyer might say, okay, okay, I'm going to cut 1% of this, 1% for the impurity, etc., and then give you a price for a gold. So either you have to run through 4, 5, 7 different jeweler offices or jewelry shops to figure out who gives you the best price, or whatever is available where you have the comfort, you have to pay. You can liquidate your gold jewelry, but the price is not very fair. It is liquid but not very fair. Gold ETFs, yes, they have the same advantage. They are traded on stock exchanges. So if you want liquidity, you can sell this gold on the stock exchanges. And if they are close-ended gold ETFs, so at the time of redemption, at the time of the maturity and date, you get your money back. The gold ETFs are redeemed. Risk when investing into gold bonds or gold products, when it comes to SGB, there is negligible, or we call it, there's no risk because it's a sovereign guarantee product. So it is backed by Government of India. You don't have to worry about any risk, both in terms of principal or your interest liabilities, because then the issuer is Government of India. It's best आपने Government of India को पैसा दिया, they will service their liabilities. In terms of physical gold, the risk is, yes, there are multiple risks. The first and the foremost risk, or the bigger risk, is the risk of theft. You always need to make sure that your gold jewelry or a gold physical gold is safeguarded against theft. The second most component is the wear and tear. On a regular, you suppose if you're taking gold utensils or jewelry, there is a regular wear and tear which happens to the your gold jewelry or utensils, and then you have to make sure that you get it. आपको उसको ठीक कराना पड़ेगा. You call it, I believe, वो टांका लगाना कहते हैं generally in Hindi. Then if there is a problem in the gold or a jewelry, then you get your things mended. Again, go to the jeweler and get it done. So first and foremost, the risk of theft, and then the second is wear and tear. However, gold ETF is a very good product in a similar way because there is no risk at all, or a very negligible risk. The only risk in gold ETF is the price or the capital risk, because you invested in X price of the gold on a particular day, whereas once you are redeeming, the capital or the price of the gold is depreciated, so you have a capital loss into it. I invested in the gold when the price of the gold was 100 rupees, but now when I am redeeming the gold, the price of the gold is reduced to 95 rupees or 98 rupees. So this is a capital risk when you invest into gold ETF. This component to a large extent is covered when you take into sovereign gold bonds. Now, returns and earnings, as I said earlier also in the past slide, when you look for gold SGB as an instrument, it gives you 2.5% per annum interest for 8 years if you're holding till maturity. So it typically means 20% of your investment value is covered, and 20% interest income is added into your returns. So even if the current market price is the same as you invested 8 years back, you have a 20% capital appreciation or a capital gain, even though it's in the format of an interest income. But I'm safeguarded as an investor. Whereas if I have invested in a similar format in gold ETF or physical gold, that if I have invested and the price of the gold remains constant for the entire period from the date of investment till the date of redemption or maturity or physical sale of gold, I have zero gain. So my holding on day 1 was 100 rupees. My holding on day 10 when I'm maturing is 100 rupees. Whereas in SGB, you have an advantage of 2.5% interest per annum. So that accumulates around 20% gain. So that is an added advantage in terms of returns and earnings. So my negative में I am 20% safeguarded. So gold price अगर negative 20% हो गया, I am still safeguarded. इसको ऐसे भी देखा जा सकता है. इसके बाद next important factor is in taxation from the investor's perspective. So a lot of queries around that already in the Q&A section. So I'll just explain. So when you invest into SGB, first and foremost, there are two formats of incomes possible. One is a given income, which is in the format of an interest income. Fair enough. On an interest income, there is no TDS applicable. However, interest is taxable as per the marginal rate of taxation. So whatever your taxable rate is, you will be taxed
for the interest income, that is 2.5%, but there is no TDS deducted onto it. The second is on a capital gain, if you held this bond till maturity, and from the maturity or the duration of this instrument is 8 years, if you held till maturity on the 8 years, whatever the capital gain may be, it will be completely tax exempted in the hands of an investor. So your 100 rupee gold becomes 150 rupees at the time of maturity. That 50 rupees which becomes your capital gain is 100% tax exempted. This is what the best provision which the government could give to the investors who are investing into SGB. However, in any other format of investment into gold, whether it is physical gold or gold ETF, LTCG is 20% with indexation. So essentially, long-term capital gain is after 3 years, whether it is a physical gold or a gold ETF. After 3 years, whatever the capital gains you have to pay tax at the rate of 20% with indexation benefit. So whatever the indexation minus 20% is what you have to pay. So gold, sovereign gold bond becomes the most tax efficient product when you are looking to invest into gold instruments. And this interest is simple interest, right? Simple interest, 2.5%. Paid every semi-annually. Paid semi-annually. And that is taxable. Though that is taxable as per the marginal rate of taxation, the only advantage is there is no TDS into it. So there's no tax deducted on the interest income. To summarize, 2.5% of the interest that is paid, that is 2.5% per annum, but paid on semi-annual basis, and the interest is taxable. The capital gain is not taxable if held till maturity. Completely tax exempted, yes. Completely tax exempted at the end of 8th year. Correct. If you redeem it at the end of 8th year, it is completely tax free. However, if you are redeeming after 5 years, after 3 years, whenever it is 3 year, 4 year, 5 year, 6 years, before the maturity, then you have an same taxation of 20% with indexation. So in case if there is an early redemption, like recently government has announced at the end of 5th year, if we give it for early redemption, then our gains will be subject to capital gain taxation liabilities with indexation benefit. Yes. Okay. Only if held till maturity for 8 years, you have that completely tax exempt advantage. Prior to that, if you are selling these bonds or trading in this bond, SGB, or redeeming this bond, whichever way you can sell it on the exchange or redeem it from the government after 5th year onwards, in any circumstances, it will be subject to the normal gold taxation LTCG, which is at 20% with indexation. The first issuance that was done by SGB by the government of India was at 2,684 rupees. This was back, if you can see on the right side, this was back on in November 2015. People who have invested in that have earned the benefit of gold going from 2,684 rupees to the last issuance that happened at 5,400 rupees. That means जो gold का benefit है, gold price जो appreciate हो, वो भी आपको मिला है. इसके ओवर एंड अबव आपको 2.5% का इंटरेस्ट पर एनम बेसिस पे भी मिला है. एंड जो इसको मेच्योरिटी तक अगर होल्ड करेगा 8 years पे, तो जो भी कैपिटल गेन आएगा, which is almost more than double the actual price of gold that is gone, that whole capital gain is exempted from any taxation if you hold it in your individual capacity. So if you see the whole market, how that is also moving, the first issuance had only interest of 245 crores when Government of India launched. The last issuance that closed was at 1,520 crores worth of participation had come in for the sovereign gold bond. And we've just plotted a small graph just to show in terms of how the demand is going up, how it is working. This obviously there is a spike over here. This was with reference to COVID times that had gone, so due to which gold prices had also seen a lot of jump and a lot of demand had come in. But if you see slowly and steadily, this graph is going up in terms of the gold price, as well as the application value is also going up, and it is the number of applications are also going up. We've just done a quick comparison on the next slide. Let's assume that if you would have invested 10,000 rupees on the left side, if you see is physical gold, on the right side there is sovereign gold bond.
10,000 का दोनों में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, maturity value let's assume is at the end of is 20,000 rupees, 20,077 rupees. Capital appreciation is obviously in terms of the value is 10,700. So the tax gain post indexation, that in terms of physical gold that you will get, is 7,907 rupees, whereas taxation in terms of taxable gain post indexation will be nil aware in terms of SGB. Long-term capital gain that will be payable on physical gold will be as high as 1,581 rupees. Obviously, some people will say that this is if we buy it in cash, then that is not legitimate. So that's the reason we will not be able to comment on that. But if you've bought it in actual white money and you've purchased it by paying tax and then later on you go to sell it, then you will have to pay a tax of 1,581 rupees. Same content. Just to add on, Sunny, even government is very cognizant of the fact that people were buying gold in cash. So that limit has brought down to 50,000 rupees. Anything more than 50,000 rupees, I believe you have to show PAN card, or there's some limit which has been levied to restrict people buying or doing transaction in the cash money. Cash segment. And plus, when you go to buy cash segment, you end up paying more premium compared to the market rate. Right. So now let's come here. Other than the capital gain, which is of 10,077 rupees, there is no tax on that. Plus, you've earned an interest of 1,375 rupees. The tax slab that we've considered right now is assumed at say 20%. So the total tax that you pay is 275 rupees versus an absolute gain of more than 10,077 plus the interest of 103.75 rupees. But even if you consider taxation indexation, then also your absolute gain is 9,802 rupees. So your absolute return is almost 98%. Whereas if you would have invested in physical gold, your absolute return was around 85%. So almost a 12% gain in terms of post taxation is what you are getting. If you do not add indexation, then this return will be more than 100% also. We are actually adjusting it to inflation and showing you the absolute returns because we have adjusted on the physical gold side also. But your absolute returns will be much higher than 98%. But post indexation, post considering the tax, the inflation, your return is 98%.